Good evening, everyone. We are here to discuss about the test 8, that is biotechnology, about all the answers. So we'll start with the multiple choice questions. And the first question is the sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector is termed. Sequence that controls the copy number. So the point is, it is asking about the copy number. Copy number of the linked DNA in the vector. So there are three aspects. There is a vector, and inside the vector there is a linked DNA, which we also called as gene of interest. Okay, and it is asking about the copy number of what? Of the gene of interest. Okay, so basically what it is asking, if we see carefully, the sequence that controls the copy number, how the copy number is calculated? Copy number is nothing but how many times, how many times the cloning happens. The cloning happens. How many times the cloning happens? What does it mean? That is how many times there is a term of replication. There is a term of replication. Because we know that each time a replication takes place, the gene of interest gets copied. Understood? Each time the replication takes place, the gene of interest, that is the linked DNA, which it is talking about, gets copied or gets cloned. From one it gets copied to 2, then 4, then 8, then 16, and so on. Okay, understood? So it is asking about the sequence, or there is something which controls the copy number of the linked DNA and the vector. So there is a vector, and inside the vector there is a linked DNA or the gene of interest. So it is being cloned or it is being copied. So it is asking what controls the copying mechanism, or what, in simple language, what controls the replication. Understood? So there are so many things in the options. First, the selectable marker. Second, the recognition site. Third, the palindromic sequence. And the fourth one is ORI site. ORI means origin of replication. Okay, origin of replication and initiation. Okay, so selectable marker. There are lots of selectable marker inside the vector, but does it play any role while copying a DNA or cloning a DNA? Is it playing any role? Does it have any significance? No, it has significance in recombinant DNA technology, where a DNA or gene of interest is being taken from a desired DNA and placed inside the vector. Okay, then recognition site, no, recognition site and palindromic sequence. It also don't have any what relation to the copy number, because palindromic sequence is where there is a term called as endonuclease, restriction endonuclease comes. But ORI site, that is the origin of replication site, it comes when there is a replication takes place. So ଯେତେବେଳେ replication ତମର ହବ ସେତେବେଳେ ORI site ର କଥା ଆସିବ, ORI site ରୁ ହିଁ ତମର replication start ହୁଏ. Therefore copy number ସବୁବେଳେ control हुए ORI site द्वारा, origin of replication site द्वारा. So the answer will be 4. Understood? Clear? Now the next one, that is the bacteria generally used for genetic engineering. As simple as that, which bacterium is used generally for genetic engineering? I must say, so many people of from you have E. coli in your mind, because E. coli generally used
in genetic engineering but as host cell. But I have already taught you in class that Agrobacterium tumefaciens, okay, Agrobacterium tumefaciens, which is generally used for genetic engineering because of so many reasons. And first, because it is easier to put a gene of interest inside the tDNA of Agrobacterium, that is TI plasmid. Remember everyone, TI plasmid, okay, tDNA ର ଗୋଟେ part TI plasmid जोटा कि साधारणतः एग्रोबैक्टेरियम रे देखा जाए हैला ना बुझा माने मने पड़ुची ना नहीं TI plasmid एग्रोबैक्टेरियम क्लास रे पढ़ा हितिला जोटा कि नॉर्मली ट्यूमर कराए प्लांट्स मानकर प्लांट ट्यूमर पे रेस्पॉन्सिबल and it has accessible pathways to cause a tumor in a plant. So सेई characteristics को देखिकी तार genetic material सहित आमर gene of interest को आनिकी जोड़ी दिया गला so that सेटा easily plant भितर को transfer हे परिबो एवं cloning हे परिबो बुझा पड़ला. So the answer will be agrobacterium. It is a very important question for your board exam. Agrobacterium बहुत ही गोटे important question board exam ପାଇଁ बुझी पारला. Competent cell preparation involves what does competent cells preparation involves. First we'll see what is a competent cell. Competent cells, competent means which is ready to accept, okay, ready to accept what, ready to accept our gene of interest. It is talking about the host cells. When host cells are ready to accept the gene of interest or the recombinant DNA, okay, or the recombinant DNA to itself, then it is called competent cells. And there are so many methods to prepare competent cells, okay. So there are calcium chloride and MgCl2 application when cells are incubated in the application of calcium chloride and magnesium chloride. These are two chemicals, you know, all of you know. तार calcium chloride और magnesium chloride देकी आपको किसी समय पे रखा हबो so that सेमानंकर जो सेल पोर्स अच्छी से सेल पोर गुड़ाक बड़ हे सो दैट तुम रिकम्बिनेंट डीएनए गुड़ाक सेल भितर को इजिली पेनिट्रेट करि पारिबे हैला. देन बायोलिस्टिक और जीन गन साधारणतः प्लांट टिश्यू क्षेत्र रे यूज करा जाए, प्लांट टिश्यू कल्चर रे यूज करा जाए. नॉर्मली एथिरे तुमरो जीन गन रे जीन्स गुड़ाक थाए बा रिकम्बिनेंट डीएनए थाए बा जीन ऑफ इंटरेस्ट थाए जो गुड़ाक की शॉर्ट टर्म रे तुमरो सेल को निक्षेप करा जिवो एवं सेल भितर को सेटा पसिबो बुझा पड़ला. Then electroporation is also a technique where high voltage of electric current is given to the cells with host cells normally for a shorter period of time like in seconds किछि सेकंड पे दिया जिवो so that से माने कोन गोटे इलेक्ट्रिक शॉक पाई कि तार पोर्स गुडाक बड़ हे जिवे एवं ता द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन हे परिबो. Therefore, the answer will be all of this. Karana application of CCl2 is also right, ballistic gene gun is also right, and electroporation is also right. बुझा पड़ला. Then restriction enzymes are ligases, sticky ends, molecular scissors, vectors. Restriction enzymes are cellular enzymes, all molecular enzymes. What is its function? They cut the DNA at specific sites, not at all sites, at specific किछि किछि जगह रे ही काटे एवं सेगुडा को हम रेस्ट्रिक्शन साइट बोली मध्य कहि थाउ. कोन कहि थाउ? रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहि थाउ. सो जेहेतु ये काटिबार काम करे
लाइगेज हेनी कारण लाइगेज लगेबार काम करे स्टिकी एंड्स स्टिकी एंड ये क्रिएट करिवो तैयारी करिवो ना कि निजे हैला वेक्टर तो केबे हे परिबनी वेक्टर इज समथिंग एल्स सो आंसर विल बी मॉलिक्यूलर सीजर सीजर माने कोन कि पहले कईची मॉलिक्यूलर सीजर या को मॉलिक्यूलर सीजर बोली consider the correct answer will be molecular seizure understood in bt cotton the bt toxin present in plant tissue is protoxin in converted sorry এটা is converted into active toxin due to what से पचारुची कि तुमर जो बीटी कॉटन रे बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट अछि नॉर्मली बीटी टॉक्सिन जो बीटी जीन थाए से जीन बीटी टॉक्सिन प्रोटीन टा तैयारी करे एवं सेटा सब बळे प्रो लेवल रे थाए प्रो टॉक्सिन माने कोन इनएक्टिव फॉर्म रे थाए सो ही इज इट इज आस्किंग दैट इज इनएक्टिव फॉर्म रु एक्टिव फॉर्म हबा पई से कोन लोडी थाए जेतेबेले से कीट बा पतंग जे भी थिबो ताकू खाइबो तार गट रे जो अल्कलाइन पीएच थाए इनसेक्ट रो गट रे सेटा ही नॉर्मली इनएक्टिव रु एक्टिव फॉर्म को आने टॉक्सिन टाको दैट इज प्रोटॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन रे कन्वर्ट करे सो द आंसर विल बी 2 दैट इज अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट अंडरस्टूड अंडरस्टूड then I have put some 2 marks questions all have been discussed in the class सब गुड़ाक क्लास रे डिस्कस हेतिला हमर 2 मार्किया क्वेश्चन जते भी थिला व्हाट इज एंडोन्यूक्लियस कोन नॉर्मली एंडोन्यूक्लियस आर व्हाट nucleus enzymes which cut the DNA but it has some specific characteristics that endonucleus सब बळे मझिरे कट करिवो DNA को ना कि साइड रु हैला एंड रो कट करिवोनी एंडो माने मझी तेणु एंडोन्यूक्लियस माने मझिरो ताको कट करिवो तेणु ताको मॉलिक्यूलर सीजर बोली मध्य कुआ गला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रो रेस्ट्रिक्शन साइट्स थाए जोठी से नॉर्मली काटी थाए नेक्स्ट क्वेश्चन पचाउची व्हाट डू EcoRI refers to in the enzyme EcoRI anyone anyone can anyone of you tell me what EcoRI refers to in enzyme EcoR1 no one okay let me explain so here eco represents E coli इकोलाई को बुझाए कारण ए एंजाइम टा इकोलाई टू सीक्रेट करा जायछि आर refers to the enzyme sorry strain RY13 strain रू आकु कड़ा जायछि इकोलाई रो R13 सो बैक्टीरिया रो बहुत सारा स्ट्रेन्स थाती RY13 नंबर स्ट्रेन रू ए एंडोन्यूक्लियस टाकू कोन करा जायछि बाहर करा जायछि हैला डिस्कवर करा जायछि एवं 1 refers to first enzyme एटा कड़ा जाइथिबा प्रथम एंजाइम तेणु ता ना होची EcoRI सो नॉर्मली तुमर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रो ना केमती रहे ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रो रा रहे प्रथम दीटा तुमर माने प्रथम वर्ड टा तुमर नॉर्मली जीनस स्पीसीज रो ना ही थाए सेकंड टा तुमर स्ट्रेन ना ही थाए एवं लास्ट नंबर टा तुमर केते नंबर एंजाइम ताकू दर्शई थाए बुझी परलो I have already explained what is biopiracy. Biopiracy होची किछि भी गोटे ट्रांसफर होची गोटे देशरु आ गोटे देशकू स्थानांतरित करा जाउची without any legal procedure or legal acceptance or any short of legal permission से knowledge हो से biological वस्तु विशेष हो
से किछि भी हो, उद्भावन हो, आविष्कार हो, किछि भी हो, जेतेबेले न्यायिक माने अनुमति बिना ताकू ट्रांसफर करा जाउची गोटे जगार आ गोटे जगह को, बा गोटे देश आ गोटे देश को, गोटे न्याय संस्था आ गोटे न्याय संस्था को, ताको हमें बायोपायरेसी कही थाउ। हैला सेमती पैटेंट, पैटेंट कोन, पैटेंट को हमें नॉर्मली अधिकार बोली कहि परिबा। सो जो गोटे जिंस जहा को तुम उद्भावन करिचो, not discover, invention, always write invention, anything you have invented, you have right on that is your own property, सेटा तमरो निजर प्रॉपर्टी, निजर माने उद्भावन हिसाब रे तमरो सरकारी कागज रे गोटे दस्तावेज रहिबा दरकार, जहा को हमें पैटेंट बोली कहि थाउ। सेटा आविष्कार हवा कथा नुह, सेटा सब बेले कोन हबो, उद्भावन रे जीवो, इन्वेंशन रे। अगेन जीएमओ और जेनेटिक इंजीनियरिंग रे तार कोन रहिची ना, जेनेटिकली जतबेले मॉडिफाई करके कोनोसी स्ट्रेन डेवलप करा गला बा कोनोसी ऑर्गेनिज्म डेवलप करा गला, सो से जिंस आगुरु नथिला, से जिंस तुमे तयारी कलो, सो इट कम्स अंडर इन्वेंशन। तो ता ऊपर तुमे पेटेंट फाइल करि परिबो इंडियन गवर्नमेंट पाखरे, बुझी पारलो। देन एक्सप्लेन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन विथ अ सुइटेबल एग्जांपल। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कोन तुमको कहिची, आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके जो वैक्सीन तैयारी करा जाए ताको रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहा जाए। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन रे नॉर्मली दी तीन प्रकार वैक्सीन तैयारी हे परिबो, डीएनए वैक्सीन, एटेन्यूएटेड वैक्सीन, प्रोटीन वैक्सीन, हैला ए सब टाइप रो वैक्सीन। एथरे कोन नॉर्मली थाए इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द पैथोजेन। आ एग्जांपल कोन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होची तुमरो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन रो एग्जांपल। एक्सप्लेन जीएमओ, जीएमओ माने प्रथम लिखिबो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एवं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा को कहबा हमें ना, जहा को जेनेटिक स्तर रे, मॉलिक्यूलर स्तर रे ता सहित किछि कोन करा जायछि, चेंजेस अना जायछि, मैनिपुलेशन करा जायछि, तार जीन सहित किछि मैनिपुलेशन करा जायछि फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, हैला कैरेक्टरिस्टिक्स जहार तार जहा भी अछि तार इम्प्रूवमेंट हवा दरकार, से हिसाब रे तार जीन सहित मैनिपुलेट करिकी गोटे ऑर्गेनिज्म गढ़ा जायछि, जहा को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कुहा जाय, हैला। golden rice, already told this in the class, golden rice beta carotene pai, beta carotene gene, hela, so beta carotene gene is orange yellow, golden yellow in color, that is why the color of the rice is golden in color and it is called as golden rice. Okay, then PCR, polymerase chain reaction, एवं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, पीसीआर रो कौन लिखिबो, एटा एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन पई आवश्यक हेई थाए। एवं तार प्रोसेस रे डिनेचुरेशन, it has three processes, consecutive processes, denaturation, annealing, and then what, extension. ओके, डिनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। डिनेचुरेशन रे डीएनए रो स्ट्रैंड दिटा अलगा हेबे, एनिलिंग रे प्राइमर आसिकी एनिल करिवो बा प्राइमर आसिकी लागिवो, एक्सटेंशन रे डाइन्यूक्लियोटाइड्स गुडा को प्राइमर टू एक्सटेंड करिवे पर्टिकुलर जीन सहित, तेनु एठी जीन रो एम्प्लीफिकेशन होउची। सो इट इज अ सेल फ्री मेथड ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग रो सेल फ्री मेथड। सेल बेस्ड मेथड कोटा हबो, जीन क्लोनिंग मेथड यूजिंग होस्ट, होस्ट ऑर्गेनिज्म को यूज करके जतबेले क्लोन करा जिवो ताको सेल बेस्ड मेथड कुहा जाय। सेल फ्री मेथड काहे की कुआ गला, एठी हमें कोनोसी सेल रो व्यवहार करूनी, ओनली जीन रो आवश्यकता घटिची। देन जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग कोन, जस्ट जोडा कहली सेटा को ही तुमे लिखि परिबो, जीन क्लोनिंग जोथरे हमें जीन रो मल्टीपल कॉपीज बनौचे एंड इट हैज टू प्रोसेसेस, either cell based or cell free। सेल बेस्ड हमें सेल यूज करू, होस्ट सेल यूज करके हमें नॉर्मली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करके वेक्टर रे पूरे की ताको हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रे जीन क्लोनिंग करि थाउ और एल्स पीसीआर रे जीन एम्प्लीफिकेशन करि थाउ। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ जीन क्लोनिंग।
Understood? These are all about 2 marks. Then 2.5 mark ର question ଦିଟା ପଡିଥିଲା, ସେଇଥିରେ ତମର ଦିଟାକ ଲେଖିବାକୁ ବୋଧେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ଭେକ୍ଟର। ସୋ ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ଆଉ ଭେକ୍ଟର ଭିତରେ ତିନିଟା ଏଟଲିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଲେଖିବ, ଏଣ୍ଡୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଉ ଏକ୍ସୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ତମକୁ ଅଲରେଡି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ଆଉ ଭେକ୍ଟର କ'ଣ। ସୋ ଭେକ୍ଟରଟା ତମର ନର୍ମାଲି ତିଆରି କରାଯାଏ, whereas ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ପ୍ଲାଜମିଡ୍ଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନର୍ମାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ରୋମୋଜୋମାଲ ଡିଏନଏ ଅଫ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ପ୍ଲାଜମିଡ୍। ବଟ୍ ଭେକ୍ଟର ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ନର୍ମାଲି ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ତୁମର ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ କ୍ୟାରି କରେ ଡିଏନଏ ରେ, whereas vector is used in genetic engineering, ହଁ ନା ନାହିଁ। तापरे प्लाज्मिड को भी जेनेटिक इंजीनियरिंग रे यूज करा जाय परिबो, ताको मैनिपुलेट करा जाय परिबो, whereas वेक्टर नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन पाई ही यूज हुए। सो वेक्टर रे तमे पीबीआर 322 रो एग्जांपल दे परिबो। देन एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस भितरे एटलीस्ट डिफरेंसेस लिखि परिबो, जे एंडोन्यूक्लियस होची which cuts the cell from inside point of view, but exonucleus sidewise रे काटे हैला, from any it cuts the DNA from either side बोली लिखि परिबो हैला। endonucleus has various type, जोठी तमे endonucleus restriction endonucleus रो कथा आनी परिबो, एवं restriction endonucleus restriction site रे काटे, whereas exonucleus normally गोटी टाइप रो ही देखा जाए हैला। endonucleus exonucleus 5 प्राइम रु 3 प्राइम पटे रही परिबो और 3 प्राइम टू 5 प्राइम पटे लिखि रही परिबो, दी पटे तमे सेटा लिखि परिबो हैला। देन लॉन्ग क्वेश्चन, प्रथम लॉन्ग क्वेश्चन अछि जे इंसुलिन फ्रॉम अ जीन, तमर कमर्शियल प्रोसेसिंग केमिति हुए इंसुलिन जीन रु। तो सेठी तमे जस्ट खाली गोटे फ्लो डायग्राम रे एक्सप्लेन करिवार अछि जे गोटे जीन ऑफ इंटरेस्ट जोटा होचे हमर इंसुलिन जीन, ताको प्रथमे केमति रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करिकी ताको कोडा हला, तापरे वेक्टर रे इंसर्ट हला, वेक्टर इंसर्ट हला परे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हला, ताको होस्ट सेल रे पूरा हला, होस्ट सेल रे इंसर्ट हला बा माने मैनिपुलेट करके ताको ये कला परे ताको क्लोनिंग करा गला बायोरिएक्टर रे। क्लोनिंग हला परे से माने रेप्लिकेट हेले, क्लोन हेले, हला परे ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन हला, जोटी प्रोटीन एक्सप्रेशन होची और नॉर्मली इंसुलिन तयारी होची। तापरे इंसुलिन को प्यूरिफाई करा हला, प्यूरिफाई करिकी एक्सट्रैक्ट करा हला, तापरे पैकेजिंग करिकी मार्केट को छड़ा हला। जस्ट फ्लो डायग्राम रे बुझेबा कथा। This type of question may not come in your exam, but the second question, what is gene cloning, explain the process of gene cloning through cell-free method with necessary diagram, एटा तमर आसी पारे। एटी ऑब्वियसली तुमको मु पचारिची पीसीआर विषय, बिकॉज इट सेल्फ फ्री मेथड आसला माने कोन पीसीआर विषय मु पचारिची। तो प्रथमे तमे आंसर दबो जीन क्लोनिंग कोन, आउ जीन क्लोनिंग सेल्फ फ्री मेथड केमिति हुए ना, तमे नॉर्मली पीसीआर प्रोसेस टाको एक्सप्लेन करिवो। तमरो पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन रे कौन कौन आवश्यक हुए, इंक्लूडिंग योर टैग डीएनए पॉलीमेरेज, डाइन्यूक्लियोटाइड्स, यही सब जिनस। तापर पीसीआर मेसिन विषय लिखिबो। तापरे ये जो नेसेसरी डायग्राम कथा कहिची, नॉर्मली केमिति डीएनए रो गोटे पर्टिकुलर जीन पाखरे आसी कि प्राइमर लागे, आगो डिनेचुरेशन हुए, तापर प्राइमर लागी कि एनिलिंग हुए, तापर एक्सटेंशन हुए, एक्सटेंशन हे कि गोटे रु दीटा, दीटा रु चारटा, चारटा रु आठटा केमती जीन एम्प्लीफिकेशन हुए सेटा डायग्रामेटिकली बुझेबो। बुझा पड़ला। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टेस्ट 8 ऑफ द बायोलॉजी, स्पेशली जूलॉजी, एवं एटा थिला बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, बोथ तुमरो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, that is the part of zoology section, and application, that is a part of botany section.
मे बी नेक्स्ट मु यूट्यूब रे गोटे वीडियो छाड़बी अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी आई हैव टेकन द क्लास इन क्राश कोर्स बट यूट्यूब पे मध्य मु गोटे छाड़ी पारे वीडियो और एल्स आउ को सार मध्य भी छाड़ी पारंती बॉटनी सर जे संबित सर भी अछंती सो आज पे एतिकी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल राइट थैंक यू सो मच